Namaskar dosto. I hope you are doing good and best. This video is specifically for human activities in commerce. Classification of human activities. We will be focusing specifically on the classification of human activities as per commerce ISC. Meaning of human activities. Human activities means all those activities all those activities which are being undertaken by whom? Humans, not by animals. Any activity that is undertaken by humans is called as human activities to satisfy human wants. These activities continue throughout their life. Human activities continue throughout their life. Like बच्चा पैदा हुआ मरेगा तब तक human activities जारी रहेगी जारी रहेगी जारी रहेगी. Unlimited, unending and recurring, continuous, recurring की टर्म क्या है? Unending, unlimited, recurring. डेफिनेशन आ सकता है 2 मार्क का. सो राइट दिस कीवर्ड्स, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, बिंदास उसको अंडरलाइन भी कर. Characteristics of human activities. Human activities are those activities which are undertaken only by humans throughout the life. Very wide range. चार तीन याद रखो, कोई टेंशन नहीं है, 3 मार्क के लिए आएगा तो फटाफट लिख देना. 2 टाइप का क्लासिफिकेशन है ह्यूमन एक्टिविटीज का. कौन से 2? फर्स्ट अरे हाइलाइटर चल क्यों नहीं रहा? डन. इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक. कौन सा? इकोनॉमिक, पैसा आएगा, मनी कमाएगा. नॉन इकोनॉमिक, सेटिस्फैक्शन पाएगा. क्या पाएगा? सेटिस्फैक्शन. So when you want satisfaction, that is non-economic activity, whereas same activity done by you for earning money, that is economic activity. Economic activities are undertaken with object of earning what? Money, acquiring wealth, accumulating wealth. Example, doctors, lawyers. Characteristics of economic activity. Economic motive. What is the economic motive? To earn money, gain economic gain. Productive. Economic activities are what? Productive. Economic activities involve production, distribution, exchange of goods and services. To what? Satisfy human wants. This activity is directly related to creation of wealth. पैसा, बहुत पैसा क्रिएट करेगा. Economic resources. Economic activities make use of economic resources. Economics में पढ़ा होगा land, labor, capital. Land, labor, capital. Land, labor, capital. Rational use. We have limited sources. Definite है ना? आपको पॉकेट मनी लिमिटेड मिलती है. यू गेट लिमिटेड पॉकेट मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स. सो व्हाट यू डू? यू स्पेंड wisely, you spend rationally, you properly allocate money to cafes, your girlfriend and etc. Correct? Parties, everything, you properly allocate the amount. Economic growth. Economic activities determine the level of what? Economic development of country and standard of living of its citizens. Legally valid. Economic activities are legal, lawful activities. It does not include unlawful activities like satta, gambling, black marketing, chori, dakati. No, such activities are illegal, unlawful, unhuman activities. They are not into economic activities. Socially desirable. Economic activities are desirable by society. They must be in accordance with expectation and norms of society. Non-economic activities. Activities which are undertaken to satisfy social, religious, cultural and sentimental requirements are called non-economic activities. The object of this activity is not to earn money. पैसा नहीं कमाना है, but to engage in non-economic activities for love, sympathy, religion, patriotism. For example, a mother looks after her children. Simple है, आप
Everyone's mother look after their own child. पड़ोसी के बच्चों को देखती है क्या? नहीं. Student donates blood. कोई भी जाएगा 18 प्लस वाला ब्लड डोनेट करेगा बाहर कैंप में, तो ही दैट द डोनेशन वाला डोंट पे हिम मनी, बट ही गेट्स सैटिस्फैक्शन, है सर्टिफिकेट मिला. यू गो टू टेम्पल डेली, नहीं जाते, जान दो. सो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नहीं भी जाते हो तो. A rich man donates money to Prime Minister Relief Fund. एकदम rich man donates money to Prime Minister Relief Fund. True. It is object of any activity. Very important question, guys. This can be asked for 6 marks. See, इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है. क्या है वो शॉर्ट फॉर्म? रेमो. आर मतलब रिलेशनशिप, ई मतलब एक्सपेक्टेशन, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, एम मतलब मेजरमेंट, एल मतलब लॉजिक, आर मतलब रिसोर्सेस. सो व्हाट दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? To living and acquire wealth, to earn a living and acquire wealth, to earn money. Whereas non-economic activity, sentimental, mental nahi, sentimental and emotional objectives. What? Emotional objectives to obtain some sort of personal satisfaction. Personal nahi, personal satisfaction. Expectation. Money income is expected from which activities? Economic activities. Money income is not expected from non-economic activities. Relationship, directly related with income and wealth, not related with income and wealth. Measurement of outcome. Result can be measured in terms of money. Simple है ना? Economic activity की है कुछ, तो you can measure the result in monetary terms, whereas result cannot be measured in terms of money. Logic, guided by rational consideration of cost and benefit, guided by sentiments and emotions without regard to gain or sacrifice. Resources, proper allocation of resources and optimum use of resources. खाली allocation करके नहीं चलेगा, optimum use करना है, optimum use करना है. Optimum allocation and use of resources not essential. Out of generosity जब आप पैसा बांटते हो, कुछ पुण्य का काम करते हो, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मैक्सिमम रिसोर्सेस का allocation करो, प्रॉपर allocation करो. Example, business, profession, employment. Then non-economic में family, religious, social, cultural and national. Types of economic activities. Definition क्या है धंधा का? Business का. Business include all those economic activities which are concerned with production, exchange of goods with object of earning profits. Business is an economic activity because it is undertaken for earning money and producing wealth. Firms providing direct services, example tailor, dry cleaner, etc. Profession means an occupation which involves application of specialized knowledge skills to earn a living. Simple है ना? Skills चाहिए प्रोफेशनल लोगों को, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्सेट्रा, लॉ, टैक्सेशन, एक्सेट्रा. The main feature of profession, specialized body of knowledge, restricted entry, formal education and training. Professional association, specialized body of knowledge. What is this? जब भी कोई प्रोफेशनल होता है, they have a specialized body of knowledge. उनका ऐसा ग्रुप होता है, उसको स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बोलते हैं. वैसे ग्रुप तो नहीं बोल सकते ना, कुछ तड़कता फड़कता नाम होना चाहिए. प्रोफेशनल लोग, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ऐसे किसी को भी घुसने देंगे क्या? सीए वाले, आईसीआई वाले, डॉक्टर वाले, भाई घुसना है ना तो एमबीबीएस कर क्या, सीए कर क्या, एलएलबी कर क्या, फिर ही घुस सकता है. तो फॉर्मल एजुकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. प्रोफेशनल एसोसिएशन, COP, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, फॉर्मुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट है. ये 4 पॉइंट्स है आपके.
मोटिव, सर्विस मोटिव, एम्फसाइज ऑन सर्विस टू क्लाइंट्स, देना है, देना है. Employment mean an economic activity where people work for others in exchange for some remuneration. Distinction between business and profession and employment. अपन इसका चार्ट बनाएंगे गाइस. ओके, give me 1 minute. We will make a chart of distinction between business, profession and employment. Wow, what is this? Inked mode of establishment. अरे चार्ट तो बना हुआ है गाइस, मजा आ गया. ऑब्जेक्टिव, बिजनेस में क्या ऑब्जेक्टिव है? टू अर्न ढेर सारा पैसा, प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट्स. प्रोफेशनल टू रेंडर सर्विस फॉर इकोनॉमिक गेन्स. एम्प्लॉयमेंट, सैलरी दे दो बाबा, टू अर्न वेजेस और सैलरी. मिनिमम क्वालिफिकेशन, नो क्वालिफिकेशन आर एसेंशियल फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस. सिंपल है ना, बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्वालिफिकेशन का कोई जरूरत नहीं है. कोई भी कुछ भी कर सकता है धंधा. आपके पास बस क्या होना चाहिए? दिमाग, पैसा, कैपिटल. प्रोफेशन, मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन एसेंशियल टू एंटर प्रोफेशन. मिनिमम सीए का डिग्री चाहिए आईसीआई का मेंबर बनने के लिए. मिनिमम एमबीबीएस चाहिए डॉक्टर एसोसिएशन में घुसने के लिए. क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द जॉब. ठीक है ना, वॉचमैन है तो वॉचमैन को ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? 10th पास, 9th पास, 11th पास. डन. स्टेटस. A businessman works for himself and is his own master. A professional works according to the guideline prescribed. Code of conduct याद आया क्या? हाँ, exactly. That is the guideline prescribed. An employee works for employer. गरीब मजदूर है, किसके लिए काम करेगा? मालिक के लिए काम करेगा. Yes. Follow the instruction of his master boss. Reward, प्रॉफिट, अनसर्टन एंड वेरिएबल. प्रॉफिट कैसा है बिजनेस में? अनसर्टन है, वेरिएबल है. प्रोफेशनल फी सर्टन बट फ्लेक्सिबल. 2 साल हो गए, फीस दी नहीं क्लाइंट ने, टेंशन आया बाबा. ओके, डन. सैलरी मंथली, रेगुलर, फिक्स्ड, नो रिस्क इन्वॉल्व एट ऑल, नो टेंशन. इन्वेस्टमेंट, heavy investment required in business, limited capital required in profession, and no capital required in salary. No advertisement in what? Business? Wrong. No advertisement when you are going for a salary. Advertisement is prohibited by professional body in profession. Advertisement is usually necessary in business. Profitability of business is sole criteria. Service to client is sole criteria. Productivity and quality of work performed in the business. Ownership of business can be transferred. Transfer is not possible. Transfer is not possible. अभी मैंने सीए का डिग्री लिया समझो, तो मैं मेरे दोस्त को ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट ट्रांसफरेबल. मेरे जॉब है, मैं वो ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या? नो, नॉट पॉसिबल. Business easily transferable. You guys, this was your first chapter. Human classification. No. Classification of human activities in economic and non-economic terms. Thank you guys. I hope you enjoyed this lecture and keep watching for more lectures. Bye. ये भी रिकॉर्डिंग चालू की थी.